some of the questions which is startup. So let me start with you, Yeah, right? please. That you have Yes, been very engaged in startup from incubation, especially, right? And absolutely. especially from colleges and universities. What are their main concerns? What do you think? Like what they ask the most? Ashish ji, before all, I would like to congratulate you for this wonderful, initiative, MentorKart. I'm telling you, this is need of this hour, and this is the time when we are working from home and we're not able to do events physically. So, and this is being the need of this hour. So, I think this is your vision, and I'm glad that somehow I am associated with you. So, Thank you very much, Sumit. Yes, it's a need of an hour, and it was, thought of so many people who have supported us, including Startup Chaupal, and we yeah. look forward to work. 100%. So the question you asked, that I am very much engaged with the startups, majorly young startups. We I used to visit colleges and all. So एक चीज है जो आप भी agree करेंगे, that there are so many common problems people are facing. I mean, there is, मतलब बहुत सारे कम स्टार्टअप है जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वेरी वेरी Hmm. बेसिक प्रॉब्लम्स. यू नो फंडिंग कैसे मिलेगी, इन्वेस्टर क्या सोचता है, इन्वेस्टर कैसे देखता है, क्या राइट टाइम है स्टार्ट करने के लिए, कब स्टार्ट करना चाहिए. अभी भी जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, you have shared with me the questions people have sent to us. अगर आप Yes. देखेंगे तो कितने कॉमन क्वेश्चंस है जो हम हमेशा हम बात करते हैं इस पे. And few questions are very good, and we'll address those all those questions. And I would also request people who all are watching, if you have any questions related to your startups, please put those questions, and me and Ashish definitely would try to address all those questions, right? So this is what my experience are, that they're very common and basic problems. So what I believe, if mentors like you and other people, if you can handhold startups at grassroots level, I mean, they're very talented, they are energetic people, they're very good, all young people. They're more talented than us जो भी आज के बच्चे हैं. But what I believe, the direction is missing, the framework is missing, the structure is missing. So अगर थोड़ा हैंड होल्डिंग उसमें मिल जाए, जो Hmm. एज यू नो स्टार्टअप चौपाल में हम करने की कोशिश करते हैं, तो दे विल टेक इट फॉरवर्ड. एंड तो इस तरह के लाइव सेशन से हम क्या कर सकते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पे रेगुलर अगर उनसे बातचीत करें, जो आपने इनिशिएटिव लिया है हर वीक में, हर तरह के मेंटर्स को बुलाए, हर तरह के सब्जेक्ट पे बात कर सके स्टार्टअप्स के लिए, दैट विल बी ऑसम. या सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि इनिशियल स्टेज पे ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, एंड यस, एक बार या जब उनको थोड़ा clarity आ जाता, then they start moving themselves as well. एब्सोल्युटली, And आई they, हैव सीन सो मेनी. once I would say once they start know that किससे क्या पूछना है, ये भी एक चैलेंज है, right? But we यस, have seen that ये किससे क्या पूछना है, किससे क्या जानना है, वो हैंड होल्डिंग के बाद उनको समझ में आ जाता है. तो okay, the तो key तो to ask. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था आशीष जी, एंड यू आर द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन. आई वुड आल्सो ऐड समथिंग इन दैट, बट यू आर द पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट यस, वेरी सीरियस क्वेश्चन. हाउ टू फाइंड अ गुड मेंटर, अ Hmm. सुटेबल मेंटर, नॉट गुड बैड, एवरीबॉडी इज गुड, बट सुटेबल मेंटर Hmm. कैसे अपने स्टार्टअप Hmm. के लिए ढूंढना चाहिए. दिस इज अ क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर मेंटर गलत मिल गया तो इट विल बी Hmm. डिजास्टर. तो एक विजडम होना चाहिए मेंटर ढूंढने से पहले. तो इस पे थोड़ा सा आई विश कि आप यू मस्ट थ्रो लाइट ऑन दिस. यस, तो इसके दो पार्ट हैं. एक तो पार्ट मैं लूंगा ट्रेडिशनल वे, दैट के फाइन पीपल एज ए स्टार्टअप गो टू इवेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में जाते हैं. बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोसिस्टम इज क्रिएटिंग, जहां पे दे कैन ऑलवेज लुक एट पैनल डिस्कशंस एंड स्पीकर से वगैरह को देखते हैं. And after that, then they can find, okay, fine, okay, this is the person whom I should talk, and then they can start interacting with them. Second thing is that it is also important, not necessary आप जिससे करना चाहते हैं उसके पास ये करने के लिए टाइम है कि नहीं है, राइट? एंड राइट. वो कितना आपको टाइम दे पाएगा, सो दैट मे बी एक दो डिस्कशन में आपको पता लग जाएगा, और वो आपको खुद बता देंगे कि ओके हाउ मच टाइम वी कैन गिव इट टू यू, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन साइन. बट द दो तीन बार जब आप उनसे बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ओके हाउ डीप और हाउ मच डोमेन नॉलेज ही हैज, एंड हाउ वेयर विच एरिया he can help you out with. Okay, that is one way of traditionally looking at कि अब इवेंट में जाओ, कॉन्फ्रेंस में जाओ, लाइव सेशंस अटेंड करो,
आपको मेंटर्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन का भरपूर यूज करो, राइट। Yes, वहां पे आपको बहुत सारा कुछ प्रोफाइल्स और सर्चेस में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को आप फॉलो कर सकते हो right. जहां से आपको पता लगेगा कि ओके, हु इज इन्वॉल्व इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम मोर, राइट। That is one way of doing. Second is that this was the biggest problem which we wanted to solve at MentorKart also, right? And Yeah, that's the reason we brought the a digital platform where and when we are going to live with the app, in which what we are going to say कि okay fine, आप यहाँ पे mentors के साथ chat कर सकते हो, बात कर सकते हो, interact कर सकते हो, ideas share कर सकते हो, help ले सकते हो, and that all you can do in private, right? So that is the kind of thing which we are bringing in, and that will solve a new so way of solving the problem. what I believe, sorry, I'm interrupting you. Just एक चीज मेरे दिमाग में आई थी. I strongly believe that this mentorship thing is very much unorganized in India. You know, Right, right, sometimes mentors are giving time to startups, means they're investing in them, right? So एक तो right, startup को भी ये realize करना पड़ेगा कि जो भी mentor आपको time दे रहे हैं वो आप invest करें, वो पैसा नहीं अपना time invest करें. That is number one. right. मेंटर की साइड से मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेंटर्स बहुत ज्यादा ज्ञान देने में बिलीव कर रहे हैं. जितने भी स्टार्टअप है कुछ भी ज्ञान देके निकल लिए. बट मेरा मानना है आशीष जी कि हमारा इमोशनल कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है. जिस भी जरूर, स्टार्टअप के साथ हम काम करते हैं, कितनी भी नॉलेज है आपके पास, अगर आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है, इफ यू डोंट बिलीव इन दैट स्टार्टअप फाउंडर, दैट स्टार्टअप आइडिया, मुझे नहीं लगता आप कितने भी इंटेलिजेंट है उस स्टार्टअप फाउंडर का कुछ कर पाएंगे आप. So this is my strong belief is this mentors should respect the startups as much they seek, और उनको बोलने का मौका दे, प्रॉपर लिसनिंग हो उनकी कि वो कहना क्या चाहते हैं. बिकॉज देयर सो मेनी टाइम्स आई सी, सो मेनी स्टार्टअप फाउंडर कम टू मी, और उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास गया था, वो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात, ये हो रहा था. मुझे लगता है वो गलत बोले सही बोले, बिना जजमेंटल हुए हम फाउंडर्स, हम जितने भी मेंटर्स हैं उनको सुनना चाहिए. इसमें मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड से वन थिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटोर तो सब लोग बोलते हैं कि ओ फाउंडर हैज टू बी पैशनेट ऑफ देयर आइडिया एंड ऑल. Is more applied to mentor also, right? That Yes, if yes. mentoring comes not by any commercial arrangement, it does not come by only by that okay fine, I will take equity, I will take fee or whatever. It is basically out of passion that you really want to help people. Are you serious? I mean saying that is something which is your passion. True. जैसे हम एजुकेशन में भी बोलते हैं ना कि पैशनेट टीचर होना चाहिए, राइट? व्हाई वी से दैट, बिकॉज if it is not your passion to help in others, if it is not a passion to build some good startup with your support, then it is not the mentoring. And that's यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था मेंटर कार्ड कि हम जो मेंटोर्स को ऑनबोर्ड करेंगे उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, right? And that's why we brought a process, 7-step process of onboarding a mentor Yes, before yes. even he get exposed to any interaction. So that is very important, I think so. Equally required है कि mentor भी passionate होना चाहिए. एब्सोल्युटली. तो अब मैं एक क्वेश्चन जो अपना आया था उस पर चर्चा करें. हाँ जी. आशीष जी, क्वेश्चन ये है कि जितने भी, so okay, so I have this question, I have made note, so can I ask this question? So let me ask this Yes, question. The sure, number one sure. question which we have received is कि सर, और ये कहीं मैंने आपका सुना भी था, इस पे आपने बहुत अच्छा आंसर भी दिया था. एंड अगेन I have received that question that sirs, what all challenges a startup can mostly face. जब भी स्टार्टअप कोई बंदा करने के लिए जाता है तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करता है. दिस इज द क्वेश्चन. क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. मेरा Okay. मेरा मुझे लगता है कि मैं रिफ्रेम करूं, क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर स्टार्टअप करने कोई इंसान जा रहा है तो. एंड यू हैव वेरी राइटली आंसर्ड समवेयर दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंटेंट टू स्टार्ट द स्टार्टअप. कैन यू प्लीज थ्रो So सम लाइट yeah, ऑन. yeah. So basically, this is very common. इसको लोग ऐसे पूछते हैं कि what are the challenges or roadblock founders may face. मैं तो राइट. कहूंगा कि कोई काउंटिंग नहीं है बॉस. ये कोई एब्सोल्युटली. काउंटिंग नहीं है, इसमें तो एंडलेस है. एवरी स्टेप you may say face not one, maybe multiple challenges. Okay, but it depends on what stage you are, and it ट्रू. also depends on why are you doing that startup. ट्रू. If you are doing that startup and suppose
a individual who was working in a some company, and he start the startup. तो उसका क्या रीजन था, why it was it alternate to job he is looking for? और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे हम अपना काम भी नहीं बनाएंगे तो फिर हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इसलिए मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ. These are not the reason. Your why has to be very, 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 very specific, and it has to come from the passion. Passion, If totally. you're not passionate about your business or a startup, you will definitely face a different kind of challenges. For example, if you're not passionate and you started the startup as a person, and then 3 महीने में जब रिजल्ट नहीं आएगा और 5 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप तो डिसअपॉइंट हो जाओगे, बिकॉज वो Right. आप पैशन नहीं थे ना उसको करने के लिए. आप तो चाह रहे थे कि अरे वाह, ग्रीनर ग्रास इज ग्रीनर एट अदर साइड वाला हिसाब हो गया. 100%, 100%. राइट. हाँ. जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा, जैसा आपने बोला सर, कि अगर आपके पास पैशन नहीं है तो कितना भी इंटेलिजेंट, कितने भी अच्छे मेंटर्स भी मिल जाए, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ टाइम यू आर द लीडर, यू हैव द लीड. एक बड़ी अच्छी बात कल बड़ा शॉर्ट में बताऊं सर, कहीं सुना मैंने कि किसी ने अपने मेंटर से पूछा कि सर क्या करूं मैं कि मेरा स्टार्टअप कई फोल्ड में बढ़ जाए, मैं बहुत बड़ा स्टार्टअप नेशनल इंटरनेशनल हो जाऊं. तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम एक काम करो, तुम समुद्र के किनारे मिलो मुझे कल सुबह. समुद्र के किनारे आया, उसको पानी में लेके गए, उसका सर दबा दिया पानी के अंदर. अब वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है. थोड़ी देर बाद छोड़ा, बोला क्या लग रहा था अभी तुम्हें? तो सर मैं तो कोशिश कर रहा था, कैसे ही बाहर आऊं, मेरी तो जान निकल रही थी. बोल रहे थे कि सांस लेने की अभी जितनी तुम्हारी इच्छा हो रही थी ना, उतना अगर तुम्हें सक्सेस होने की या स्टार्टअप चलाने की इच्छा है, थोड़ा भी उससे कम नहीं, देन ओनली गेट इनटू दिस, अदरवाइज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. करेक्ट, करेक्ट. सो ये है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि यस, क्या क्या चैलेंजेस. सो एक तो ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि बाय पैशन यू आर स्टार्टिंग इट, लेट्स assume that is you are passionate about it, then yes, you will have a different kind of challenges you will face to make it happen. It may be related to the idea which you started with, and over the period of time then you realize, oh, this is not going to work, or this may have to work with a different tweaking of this idea, और आप जहां से शुरू हुए थे कहीं और पहुंच गए हो. एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम विद द एडवाइजर्स, लाइक कोई मिल नहीं रहा है, किससे आगे पूछें. यू मे हैव प्रॉब्लम विद द फंडिंग, नहीं आ रहा है. यू मे हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग द को फाउंडर, सो एंड देन फर्दर द टीम. एमवीपी बना लिया तो मार्केट में कैसे लेके जाएं, उसके चैलेंजेस हैं. पहला कस्टमर कैसे लेके आए, के चैलेंजेस हैं. इफ यू आर B2B तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी, राइट. कंज्यूमर है तो उस केस में भी कहाँ है, कौन सा ज्योग्राफी को हम टारगेट करें, क्या करें क्या ना करें. So you will have all kind of challenges and face, or many time it will happen. I would say 90% it may happen that what you thought that will work is not working, but something else is working. Something else will working. Yes. Something else will work. But if you Only are problem. into this, yeah, if you are into this day and day night and you're living in that dream, that something will work, you would come to know, and you will learn faster, and you will apply that, and things will start working. Only thing I say to all the founders, one thing last, is that be flexible. Be flexible to change. You don't have to be rigid. Yes. If you are rigid, then there is a problem. Then there is a problem. तो यहाँ पे मैं एक ही चीज ऐड करूँगा, जो आपका क्रक्स है, जो भी आपने बोला, वो ये है कि नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप. एक ही फॉर्मूला है इसका, एंड बी फ्लेक्सिबल, एंड डोंट इमोशनली गेट कनेक्टेड विद स्टार्टअप. क्योंकि अपने आइडिया के साथ, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो अपने आइडिया के साथ इमोशनली इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि जब वो मार्केट में जाते हैं, नीड है नहीं है उसके बिना भी वो करने की कोशिश करते हैं. गाइज, यू अंडरस्टैंड, most of the cases में you can only sell what people want to buy, you cannot sell what you want to sell. So इसके लिए जरूरी है आपका फ्लेक्सिबल होना. वेरी राइटली आंसर. तो एक दो क्वेश्चन यहाँ लोगों ने डाला है, let's answer those questions. आशीष जी, एक Sudhir is asking that it is very difficult to identify who is a mentor, because now everyone is putting mentor and investor in their bio. I hope MentorKart will solve the budding entrepreneur problem. A great initiative. Sudhir, let me answer this. Sudhir, first of all, ये जो आपने बताया, this is the real pain. One student asked me a day, one young startup, that सर ये बहुत सारे गली गली में स्टार्टअप हो गए हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें दैट, और बहुत कंफ्यूजन होता है.
तो मैंने उसको बोला कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत सारे स्टार्टअप गली गली में हो गए, प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारे मेंटर्स गली गली में हो गए हैं। बहुत स्कैनिंग की जरूरत है मेंटर्स की, एवरीबडी इज सेइंग। बट एक चीज मैं बता दूं आपको कि हर कोई मेंटर हो सकता है अपने अपने फील्ड में, राइट? यू कैन ऑल्सो बी आर मेंटर इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड। बट जब स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्कैनिंग की बहुत जरूरत है, एंड ऑफ कोर्स मेंटर कार्ट इज डूइंग दैट 7 layer स्कैनिंग। सो सर, इफ यू टॉक अबाउट दैट, the scanning we are doing 7 phase 7 stage, so please talk about that. Yeah. So basically, Sudhir, as you said that yes, everybody putting painter and investor, yes, they will be. Let's assume they all are good, right? Yeah. But until you meet a person or talk to a person, meet means it's not necessarily physical. It may be on the call, it may be on a video, audio, wherever it is. First of all, my suggestion always that talk to a mentor or interact with the mentor couple of times before even either you will learn okay he is good for you, or you will learn he is not good for you, whatever it is, but ultimately it will give you some learning and you will be able to identify as a mentor card how we are solving this problem, that this job we are doing it for you, right? So basically where we are going and we are talking to the mentors, we are reaching out to them. Some of them are known to us, some of them are not known to us. We are screening their profiles, we are interacting with them, we are identifying their interest area. We are also identifying what are their specialization. We are asking them to provide their credentials. They are giving us their YouTube videos, interactive bio, etc., so that we are screening them also. Then after that we do a couple of calls, and after that we agree to onboard that okay this mentor he is target entrepreneur is like this and this is interested here, and then we onboard it. This is how we do it, and then also we don't leave it that okay fine that is the best and then you can interact. Then we are creating those mentors group inside the platform where mentee comes interact, and then after that you also have a multiple choices in terms of whom you want to talk one to one. So even after coming onto the platform you will have lot many people who are there experts which are there, and then you will identify. Also I would suggest it may not be necessary that only one mentor is good for you. You may Ah, have to go for a domain expertise, sometime for sales, sometime for specific for certain areas, sometime for finance, legal, etc. So I'm saying in the one platform you will get all those identification. That is how we are looking at. So that's the Sudhir, and thank you for mentioning that it's a great initiative. Yes, we are trying our best to make it good for you, and yeah. over the period of time it will evolve, right? That's what we expect. We have Shiv one more Shankar. question, Shiv Shankar. Yes. Yeah, Shiv Shankar Sharma is asking. So he's asking a question. I have many plans in mind and startup, but how can I write on paper? So yes, sir, यहाँ पे मैं जल्दी से इसको शिव शंकर Sure. आपको बता दूं कि there is a structure. Of course, बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और कई बार हम भूल भी जाते हैं, कहीं रह जाता है, तो बहुत जरूरी है कि उसको पेपर पे लाना। लेकिन बहुत सारे जब आप जैसे यंग लोग हैं जिनको पता नहीं कि किस स्ट्रक्चर में लाना है, तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे बहुत क्विकली कि आप इनिशियली गूगल पे जाके टाइप करना बिजनेस मॉडल कैनवस फॉर्मेट, बिजनेस मॉडल कैनवस फॉर्मेट, बीएमसी फॉर्मेट। वहां पे आपको 9 कॉलम का एक फॉर्मेट मिलेगा, वो 9 कॉलम्स को भर दो आप, एंड उसमें एक्सप्लेनेशन भी है किसमें क्या होना चाहिए। आपका जो भी दिमाग में आइडिया इधर उड़ रहा होगा सब एक पेपर पे आ जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू प्लान फर्दर। आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अपने मेंटर्स को और जिसको भी करना है, राइट? सो दिस इज द आंसर फॉर यू। आई होप दिस इज सफिशिएंट। आशीष जी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दैट। Yes, yes, yes. We can take one more question, which is came from the link No, on the form. I think no. so, yeah, from Daya Prakash. Yeah, Daya Prakash. Yes, yes. So, yeah, I do have that question also. Let me read that question, and we both will try to answer this question. I think this is a nice question. I really like this question. We are a business which has achieved self sustainability. However, we are at a juncture where we have to decide whether we should achieve organic growth in bootstrap manner only or go for funding to speed up growth. What, as per you, is the best practice, and what are the parameters to influence this decision? So, सबसे पहले दिव्य प्रकाश, this is the wonderful question. I mean, somebody has made him sell him his startup self-sustained, and then asking this question. So, Ashish, you will address this first, and then I would like to add something in that, sir. Sure. So
Devaprakash, thank you very much for asking this. And I think so. Many of the businesses which are already established and good for them as a organic growth. So the question which you ask, I would like to start here. That if you have to sustain in any business today, you have to grow. True. Question is whether you grow bootstrap organically or you go and do a high scale. Now, when we talk about growth, I'll just like to give an example. Think about those startups or businesses who started 10 years back, okay, or 15 years back. And they started with some business model which was addressing some specific need of the specific customer. ओके एंड टुडे उनको हम बोलते हैं एमएसएमईज राइट कि वो एक बियॉन्ड पॉइंट पे ग्रो नहीं कर पा रहे कोई किसी बिजनेस में है बट दे आर नॉट एबल टू ग्रो बियॉन्ड 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 अ पॉइंट बिकॉज एक बार बिजनेस शुरू किया उसके ऑपरेशंस में घुसे और फाउंडर बिजनेस एज यूजुअल प्लान में ऑपरेशंस में स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड बियॉन्ड अ पॉइंट दे वर नॉट एबल टू इन्वेंट इनोवेट और स्केल. And that is the reason now they are facing disruption in the market by other startups. Whether it's the logistic industry or it's the food industry, you see lot of disruption happening. Whether it's a social media industry, so everywhere disruption is happening. So whatever business you are doing today, if you do not grow, you may have a challenge of getting disrupted by somebody else in your business. So we need to grow. Now coming to organic or scale. Now this is the choice point founder has, right? His aspirations, what he look for. If his aspiration is to grow faster, grow bigger, and go nationally, internationally, then definitely the fund is required for doing that. And your kind of a startup is the ideal for it, where who has sustainability, who has some profit, and they are looking for growth, right, in terms of it. So I would say that if you have aspiration to grow bigger, then look for the fund and then make a plan and approach the investors to do that. If you have operationally profitable and all that. If you want to just be champion of your area, your locality, wherever this business you are doing, then look at growth there. But you will be having very limited, and there will be a challenges of getting disrupted. So that is what my submission is here. Sumit, if you want to add something, you can go ahead I and do just that. want to say whatever you said, I totally agree with that. And one thing I strongly can say, sir, that Divya Prakash, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो चीज बनी है ना वो आप जैसे स्टार्टअप्स के लिए बनी है. So I want to give message to all the people who look for funding at ideation stage. See, एक बार self sustain होना पड़ेगा आपको, bootstrap करना पड़ेगा. Now Divya Prakash is saying I have done that part. We have self sustained. So investment funding investors आप ही के लिए हैं, and you should definitely go for that. This is your right to get funded and scale your startup, because yes, अगर आप एक लेवल पे काम करने के बाद अगर फास्ट ग्रो करना चाहते हैं अपने आप को, तो फंडिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, वरना ग्रोथ स्लो होगा. और अभी बहुत कॉम्पिटिटिव है मार्केट, सो यू नीड टू बी फास्ट. उसके लिए फंडिंग के लिए डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर. Right. So I think so. For Dev Prakash, this question is done. Do we have more questions? So Yes. at this point, I think we decided to have 30-minute session, sir. So it's 29 minutes 8 seconds. Sure. So एक जय रंजीत भट्ट का एक question last आया है. I think we should take this question and then we can sum it up. So how much to raise for Sure. seed fund? This is a very subjective question, Jay Ranjit. Some people, few people raise 10 lakhs and this call it seed funding. Few people raise 2 crores, 1 crore. So कुछ इसमें limit नहीं. This is very subjective. Sir, please, if you wish to add something in that. Yeah. So Jay, it all depends on what is your plan and what stage Yeah. you are. Suppose I imagine that you are a bootstrap and you are having some operational profitability, etc. And so then you have to make a plan for it. So suppose you want to make a plan that okay, today I'm working in a Delhi area, Delhi NCR, and I want to have the same business going into the more scalability in Delhi NCR to approach more customers, or I want to start in Mumbai also. So what is the expenses I would have? Now, what is the team I need for that? What is the other expenses or infrastructure I need for it, right? What is the software enhancement I need? So it all depends on expenses what you're going to incur. Yes, And yes. How much do you need? How much do you need?
instead of Yes. asking this, you ask this Yes. question to yourself: how much money do you need? Do proper Right. planning, proper financial Yes. projection, cost structure बनाए, and you'll get the answer कितना चाहिए, and कहाँ कहाँ खर्च करोगे, उसका ROI क्या होगा, इसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा. Yeah, देना then only. पड़ेगा कि आप किसी से पैसा लोगे, जैसे आप कहीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, स्टॉक में पैसा लगाते हो, तो एक्सपेक्ट करते हो ना कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा. 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर ये पैसा लगा के रखते तो इन्वेस्टर भी आपसे पूछेगा, ठीक है, Of course. आपको 50 लाख चाहिए, देने को तैयार हूँ, तुम्हारा प्लान अच्छा है, टीम अच्छी है, मैं दूंगा, लेकिन मुझे बताओ हाउ मच यू विल गिव मी इन रिटर्न. So again, he is Is asking 100x an ideal amount for seeding? What is that you want to say? 100x of what? we did not get your question, Jay. Yes, So if sir. you can explain, is 100x means 100x of your valuation? You're saying? I don't know. You can explain this question first. So I think, sir, आज के लिए I think we are done. But एक चीज मैं यहाँ पे बोलूँ कि this is a wonderful initiative, and every Saturday we should definitely invite few good people from this ecosystem, leaders from the ecosystem, and they can come and guide on different topics. Investment पे specific, marketing पे specific, financial projection पे specific. So हम एक कमिटमेंट देते हैं इस वीडियो के थ्रू लोगों को कि मेंटर कार्ड के प्लेटफॉर्म पे विल कीप इनवाइटिंग पीपल एवरी Yeah. सैटरडे. जो भी टाइम सर अगर अभी आप अनाउंस कर देते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम व्हिच वी आर I एट. feel 7:30 is the best time, Real time, especially yes. for it's the best time. And we will do a topic wise. So we will Good circulate on topic. our LinkedIn and Facebook by. Today was more of open, and now next level it will be a topic wise, and there will be a speaker announced to all of us. Speaker announcement, and stay connected to MentorKart page and Startup Chaupal page. We'll be announcing there, and every Saturday 7:30, be with us, and we'll have people, and you can ask anything, everything regarding your startup. And trust me, you don't need to go anywhere. You will find all the solution here on your screen only through MentorKart. So thank you so much, Ashish ji. It was great Thank being with you. us, and I'm really Thank proud you. and Thank you, happy. Sumit, for coming. Short notice. No, I'm really proud and happy to get associated with this wonderful platform and this need of this hour. And this is going to rock, I'm sure. Thank you so much. Thank you.